सो लास्ट क्लास में यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वर्किंग कंक्लूड कर ली थी थ्योरी का काम। सो आज थोड़े से इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। सो फिर वो अभी स्टार्ट करा दूंगा। ऑलराइट, क्वेश्चन की वर्डिंग मेरे साथ साथ फॉलो कर लो। आंसर का कोई सजेशन देना हो सो या ऑडियो ऑन कर देना, मैं तुम लोग का ऑडियो का ऑप्शन एक्टिवेट कर देता हूँ। अदरवाइज टेक्स्ट में लिख देना, विच एवर वे इट सूट्स यू। ऑलराइट यार, सॉरी गाइस। सो बेटा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इट सेज अ स्मॉल चार्ज्ड मेटल स्फीयर is situated in an earth metal box. Figure 4.1 illustrates the electric field lines between the sphere and the metal box. So the field lines are given to you between the sphere and a metal box which is connected to the earth. First part में wording थोड़ा carefully देखना, especially इसके theory वाले parts की. By referring to figure 4.1, state and explain whether the sphere is positively charged or negatively charged. ठीक है, आंसर किस तरह से attempt करेंगे? Field lines are directed away from the sphere. Therefore, positively charged. ठीक है, सेकंड पार्ट रोहिल वाला लिखा था स्टेट एंड एक्सप्लेन, तो दोनों चीजें होनी चाहिए थी। अच्छा, सेकंड पार्ट, व्हाई इट अपीयर्स एज इफ द चार्ज ऑन द स्फीयर इज concentrated at the center of the sphere. So which diagram implies that the charge is concentrated at the center? Field lines, if extended, will intersect at the center. Therefore, sphere behaves as a point charge. ठीक है? So a point charge is one in which all the field lines, if extended, they will intersect at the center. फिर next वाला part. On figure 4.1, draw an arrow to show the direction of the force on a stationary electron situated at the point A. Zoom in कर रहा हूं. So point A के ऊपर if an electron is positioned, in which direction should we expect this electron to move? Now remember, the sphere is positively charged and the electron itself is negatively charged. So the direction of the movement of the electron should be marked like this. They are giving you 2 marks. Huh? So 2 marks किस चीज के दे रहे हैं वो जरा देख लेना. मैं आंसर वर्डिंग्स में लिख देता हूं, आप डायग्राम के साथ आंसर की वर्डिंग्स को मैच कर लो. Direction of force, inwards and making a tangent ठीक है, दोनों चीजें रेलेवेंट है. On the electron the direction will be inwards and it should be making a tangent as indicated. अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन होता ना, फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन होता, सो अगेन द डायरेक्शन इज गोइंग टू बी मेकिंग अ टेंजेंट बट इनवर्ड्स के बजाय आउटवर्ड्स हो जाएगा. ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनवर्ड्स एंड मेकिंग अ टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में इसमें कैलकुलेशन चाहिए होगी. The radius of the sphere is 2.4 centimeters. The magnitude of charge is 0.76 nanocoulombs.
use the formula to calculate the electric potential. Charge is 0.76 nanocoulombs. So ये बन जाएगा distance in centimeters 4 pi e naught. डिस्टेंस कन्वर्ट कर लेता हूं तो ये हो जाएगा. ठीक है, आई गेस ये कैलकुलेशन ना कीजिएगा अली. I'll only ask you for calculations if I need that answer in the next part. So since I don't need the answer now, I'll just leave it at this point. फिर बाद में तुम लोग कैलकुलेट करके फिगर आउट कर लेना. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा. आपकी स्क्रीन पे आ जाए ना, फिर रीड करता हूं. ठीक है. Two charged points A and B are separated by a distance of 6 centimeters as shown. डायग्राम पे चेक कर लेना. They are separated by a distance of 6 centimeters. ठीक है, the points are labeled as A and B. In the next line, it says the variation with D from A of the electric field strength along the line AB is given in figure 3.2. So the graph is given to you for electric field strength against distance. ठीक है, जरा यूनिट्स का ख्याल रख लो. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज किलो वोल्ट्स पर मीटर, कन्वर्ट करना पड़ेगा. डिस्टेंस इज सेंटीमीटर. एनीवेज, ठीक है. नेक्स्ट लाइन में इट सेज an electron is emitted with negligible speed from point A and travels along the line AB. So मैं ड्रॉ कर देता हूं, चेक कर लीजिएगा. तो इलेक्ट्रॉन आपका इमिट हुआ है from the point A, and the question says this electron will travel along the line AB. If I need the diagram, I'll go back to it. आप जरा याद रख लीजिएगा. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में से state the relationship between the electric field strength and the potential. ठीक है, they're asking us to obtain a relationship between these two quantities. नोट्स में से याद कीजिएगा. इसका रिजल्ट ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कोई पॉइंट अगर आपको नोट्स में से याद नहीं आया ना, तो मुझे जरा बता दीजिएगा, तो मैं आपको फिर नोट्स के ऊपर ले जाकर वो वाला पॉइंट हाईलाइट करा दूंगा, इन केस अगर जरूरत लगे तो. और अगर आपको देख के लगता है ना कि आप रिलेट कर सकते हैं, तो फिर स्किप कर दीजिएगा, फिर बाद में नोट्स में से खुद फॉलो कर लीजिएगा. इन केस कोई पॉइंट लगता है तो फिर मैं उसको शो कर दूंगा. फर्दर ऑन नेक्स्ट पार्ट के अंदर, द एरिया below the line of the graph of figure 3.2 represents the potential difference between A and B. Determine the potential difference between AB. Okay, so the question is saying that the area under the graph represents potential difference, and they are asking us to calculate the value of this potential difference. अच्छा, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे ना, ये मैं डायग्राम पे साइड बाय साइड पहले कर लूं, इसके बाद आंसर लिख लेता हूं. सो मैं थोड़ा सा डायग्राम की साइड पे वर्किंग कर रहा हूं, तो आप जरा केयरफुली देख लीजिएगा. So since the question says कि area denotes potential difference, so let's start by counting area under the graph कितना होगा. ये वर्किंग यार 2-3 दफा पेपर्स में रिपीट हुई है. इसको जरा केयरफुली देख लीजिएगा कि एरिया अंडर द ग्राफ को कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ बॉक्सेस. आप जरा मेरे साथ साथ देख लें कि आई स्टार्ट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ बॉक्सेस व्हिच कवर द एरिया अंडर द ग्राफ. सो आई एम डूइंग दैट राइट नाउ. आई हैव कंस्ट्रक्टेड वन बॉक्स विद अ रेड मार्कर. सो होपफुली आपको यार एक बॉक्स तो डेफिनेटली प्रॉपर फॉर्म में नजर आ रहा होगा. आप जरा बाकी बॉक्सेस की मैं लेबलिंग कर रहा हूँ ना, आप जरा चेक कर लीजिए.
अच्छा, any box which is getting covered more than 50%. कोई भी बॉक्स अगर more than 50% कवर हो रहा है, so count it as one. And if a box is getting covered less than 50%, then ignore it. अभी तक 18 बॉक्सेस आ गए हैं, अभी और भी काउंट कर रहा हूँ. ठीक है, फिलहाल मैंने देखिएगा 21 बॉक्सेस काउंट किए हैं. अच्छा, अब जो जो मैंने इग्नोर किए हैं ना, वो भी जरा देख लें. गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट. मेरे कमरे में वो एसी लगाने वाला आया है, सो आई जस्ट नीड अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स और मोर. सो इसको कमरा चाहिए होगा या वो कितनी देर लगेगी फिट करने में? ठीक है, बुला लो. शोर तो नहीं होगा? ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई सामान चाहिए होगा ना रखने के लिए. ऑल राइट, सॉरी गाइस. ठीक है, सो द एरियाज व्हिच आई एम मिसिंग आउट ना, एक मैंने ये वाला मिस आउट किया, इसको इग्नोर कर देना बिकॉज दिस इज कवरिंग लेस देन 50%. अच्छा, मुस्तफा ने लिखा हुआ है ऊपर वाला, 18 के ऊपर वाला, उस पर बाद में आता हूँ मुस्तफा. और एक और जो मैंने मिस किया हुआ है ना, वो ये वाला है. तो द वंस विच आर लेस देन 50% ना, वो मैंने इग्नोर कर दिए हैं. ये दोनों मैंने इग्नोर कर दिए हैं. सही. और जो मुस्तफा ने लिखा था ना 18 के ऊपर वाला, जिसको मैं ऑरेंज कलर से शो कर रहा हूँ, आई कैन टेक दिस एज हाफ. तो इस वाले बॉक्स को हाफ अ बॉक्स काउंट कर लेता हूँ. सो 21 कंप्लीट बॉक्सेस हो गए. हाफ अ बॉक्स इज द ऑरेंज वन, और जो मैंने इग्नोर किए हुए ना, दोज आर द ग्रीन बॉक्सेस. सब वर्किंग कैसे करनी है? तो काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस फर्स्ट. So यार, they usually give you a range. So in my case, the number of boxes can be anywhere in between 21 and 22. I have gone with 21.5. Okay, so I have gone with 21 and a half, and I've given you a suitable range, 21 and 22 boxes. अच्छा, एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आया ना, एक्चुअली 3-4 दफा आया है. एवरी टाइम it has been 21 and 22 boxes. So every time around when I've checked in the past papers, the answer has always been except 21 and 22 boxes. So अगर इस तरह का कोई एरिया का ग्राफ आता है, तो जरा याद रख लीजिएगा कि पिछले सारे occasions के ऊपर, no matter what kind of graph they have compiled, somehow the answer has always fallen in between 21 and 22 boxes. Anyways, ये तो पहला स्टेप हो गया. ठीक है, अब let's start by calculating the area of each box. So ये second step है. So area of each box will be length times breadth. अच्छा, जरा वैल्यूज को डायग्राम पर से चेक करो. Length is 1 centimeter. Breadth is 2.5 kilovolts per meter. जरा चेक कीजिएगा. Length is 1 centimeter. Breadth is 2.5 kilovolts per meter. I'll just label the length and the breadth. यार मुझे हटने की जरूरत पड़ेगी. Guys, just give me a moment. या मैं सही हूँ? आप लोग कर लेंगे ना अपना काम? ठीक है, तो ले जाइए इसको. ख्याल रखिएगा पंखे का. So guys, just give me a minute यार. आप एसी को भी शिफ्ट कर लें ताकि मैं चेयर को थोड़ा पीछे करके अपना काम शुरू कर दूं. All right, guys. Sorry. Okay, so calculating the area of each box. So that's 1 centimeter. That's the base or the length you may want to call it, multiplied by 2.5 kilovolts per meter.
हुसैन विंटर में एसी नहीं यार, द एसी wasn't working for quite some time. So चाहिए तो है. So if I were to simplify this, 1 centimeter becomes 1 times 10 to the power of minus 2 meters. And 2.5 becomes 2.5 times 10 to the power of 3 volts per meter. So if you simplify, the answer of each box turns out to be this much. Okay, so this concludes 2 steps. So firstly, we calculated the area under the graph that was in between 21 and 22 boxes. Then secondly, we calculated the area of each box, which in this case is coming out to be 25. So now the final working. So the total area, I've purposely done the working right besides the diagram. So the total area in this case will be area of each box multiplied by the number of boxes. Okay, so your answer should range in between. So Ali, can you help me out? If I go with 21 boxes, what will I get? And if I go with 22 boxes, what will I get? I'll write down both the answers in the form of a range. So 21 के साथ देख लेना यार, और 22 के साथ भी देख लेना, ताकि मैं दोनों आंसर्स की रेंज लिख लूं. ओके, हाँ 21.5 का भी दे देना मुझे, बट पहले जरा मुझे 21 और 22 दोनों दे दो यार. So I think with 21 we will end up with 21 का आंसर. All right, so this is the range. ठीक है, so I've written down the entire range between 525 and 550 volts. Good enough. So coming back to the working. All right. So we have taken 21.5 boxes. So here as a final answer, I've written down the value based on my calculation. So we have gone with 21 and a half boxes. So based on that, मेरा आंसर 537.5 बन रहा है. ठीक है, और मैंने रेंज आपको बता दी थी. So the range is the one जो हुसैन ने ऊपर लिखा था, 525 to 550. But in my case, it's coming out to be 537.5. Next part में, using the answer of the previous part, calculate the speed of the electron as it reaches the point B. यार ये जो स्पीड वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट भी बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आ रहा है. रीसेंट पेपर्स के अंदर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, somewhere along the line, they ask you to calculate the speed of the particle. That particle could be electron, proton, whatever, but generally speed का पूछ रहे होते हैं. So यार ये वाला भी पार्ट जरा केयरफुली देख लेना कि how can we calculate the speed. इसकी बड़ी stereotype working है. The speed का answer can be worked out on the basis of law of conservation of energy. So let me write down the complete statement. So based on law of conservation of energy, a change in kinetic energy. आप लोगों का यहाँ काम हो गया. ठीक है, बस जाते हुए दरवाजा पूरा बंद कर दीजिएगा. इसको कब ऑन करूं मैं? ठीक है, बता दीजिएगा. शुक्रिया.
Sorry, guys. So, change in kinetic energy, delta KE is equal to change in electric potential energy. The change in kinetic energy is half mv square. Speed find करनी है, mind you. And change in electric potential energy. Electric potential energy का फॉर्मूला ये था. अब नंबर्स लगा देता हूँ. So m is the mass of the electron. स्पीड आपको फिगर आउट करनी है. Q is the charge of the electron. अच्छा, काफी लोग लेते हैं सर, काफी लोग कहते हैं सर चार्ज के साथ माइनस लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए. So I don't think in this point of at this point of time it really matters because the question is asking you to calculate speed, which is a scalar quantity. तो इसलिए माइनस लगाए ना लगाए it hardly makes any difference, at least in this case. और potential difference का आंसर आपने previous part में निकाला था, which according to my working was 537.5. ठीक है यार, ये कैलकुलेट करके देख लेना स्पीड का रिजल्ट कितना बनता है. जनाब, स्पीड का आंसर जी. अली तुम वर्किंग करते जाओ, मैं तब तक नेक्स्ट पार्ट रीड कर रहा हूँ. स्क्रीन पे मेरे आंसर आ जाएगा ना, तो मैं फिर मैं फिलअप कर देता हूँ. नेक्स्ट पार्ट बाकी लोग देख लो. ये नेक्स्ट पार्ट भी 2-3 दफा एग्जाम में, ये पूरा क्वेश्चन मैंने इसीलिए सेलेक्ट किया था कराने के लिए बिकॉज इसमें एरिया अंडर द ग्राफ भी रिपीटेड है 2-3 दफा. ये वाला पार्ट स्पीड कैलकुलेट करने का तो न्यूमरस ओकेजन्स पे आता है. ओके यार, मेरे पास रिजल्ट हुसैन ने दे दिया. लेट मी जस्ट राइट दैट डाउन फर्स्ट. So the speed is coming out to be 1.4 times 10 to the power of 7 meters per second. Okay, next part देख लेना. Use figure 3.2 to determine a value of d at which the electron has maximum acceleration. Ryan ने लिखा हुआ है if velocity was asked should we take the sign into account. हाँ यार, अगर velocity होता ना तो तुम माइनस साइन रायन लिख देते, लेकिन जब तुम कैलकुलेशन कर रहे होते ना तो तुम्हें बहरहाल कैलकुलेट करते हुए माइनस साइन को इग्नोर करना पड़ता बिकॉज अंडर रूट नहीं निकल सकता विद द माइनस साइन इन प्लेस, तो वो एरर आ जाता. तो लिखते हुए जरूर लिख देते, लेकिन फाइनल स्टेप में कैलकुलेट करते हुए यू वुड नॉनदलेस स्टिल हैव टू इग्नोर द माइनस साइन. ठीक है, अदरवाइज द स्क्वायर रूट नहीं आ सकेगा. एनीवेज, सो द क्वेश्चन इज आस्किंग यू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ डी एट विच द इलेक्ट्रॉन हैज मैक्सिमम एक्सेलरेशन. अब इसकी वर्किंग कैसे करनी है जरा केयरफुली देखिएगा. I'm starting with the formula F is equal to ma. Now from AS level, I've replaced the term force by the term EQ. So my result turns out to be EQ is equal to ma. ठीक है, पहला step तो ये हो गया. Now the question is asking me to figure out for which distance should the electron have maximum acceleration. So recognize the fact that if you want the acceleration to be maximum, then for that to happen, the electric field strength must also be maximum. है ना, तो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ. Since electric field strength is directly proportional to acceleration, therefore जब acceleration maximum होगा तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन वाज आस्किंग अस किस पॉइंट पे ये कंडीशन अराइज करेगी. तो अली असगर ने सही आंसर दिया है. लेट्स गो बैक टू द डायग्राम टू सी ई मैक्स कहां पर आता है. सो फ्रॉम द डायग्राम यू वुड रिकॉग्नाइज, आपकी स्क्रीन पे आ जाए ना, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं जी. फ्रॉम द डायग्राम यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज maximum value of electric field strength is at the point which I have marked. And this is the point where the value of D is 0.
आपकी स्क्रीन पे आ जाए, सही। सो आई कैन यूज दिस पॉइंट नाउ फॉर माई आंसर। ठीक है, तो जरा वर्किंग की स्टेटमेंट्स वापस से पढ़ लेना। आई स्टार्टेड विद एफ इज इक्वल टू एम ए, आई रिप्लेस फोर्स बाय द टर्म ई क्यू, so I got EQ is equal to MA. Then I realized that electric field strength and acceleration are both proportional to each other, which meant कि acceleration maximum होने के लिए electric field strength must also be maximum. Then from the graph I realized that for the value of D to be 0, I was getting maximum value of electric field strength. So वो मैंने आंसर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है जो अली ने स्टेट किया हुआ था। अच्छा, अब लास्ट पार्ट। Without any further calculation, describe the variation with the distance of the acceleration of the electron. So the question is saying, describe how acceleration varies with the distance. Now, the fact that we have already established that acceleration is directly proportional to electric field strength. So my answer इसी की basis पे दे रहा हूँ. So again, let me go back to the diagram. मैं highlight करता हूँ, आप जरा देखिएगा. The portion which I am highlighting right now with the pink marker, this is the portion where electric field strength is decreasing, which means that from 0 to 4, since electric field strength is decreasing, that means acceleration must also decrease. So पहले मैं ये statement लिख लेता हूँ. For x is equal to 0 to x is equal to 4, as electric field strength decreases, sorry, comma, acceleration also decreases. ठीक है, this was the portion जो मैंने पिंक वाले हाइलाइटर से आपको शो किया था. Now proceeding on further. So डायग्राम दोबारा आपके सामने आ जाए ना, तो फिर मैं प्रोसीड करता हूँ. ऑलराइट, अब बाकी का पोर्शन देख लेते हैं. आई एम हाईलाइटिंग दिस पोर्शन विद द ग्रीन कलर. कैन एनीवन सजेस्ट ग्रीन वाले के लिए क्या वर्डिंग होनी चाहिए? जी, कैन एनीवन सजेस्ट ग्रीन वाले के लिए क्या वर्डिंग होनी चाहिए? फिर मैं आंसर लिख लूं. आप लोग ग्रीन वाला पोर्शन जरा देख लीजिए और फिर मैं आंसर लिख लेता हूं. किसी को मीनवाइल सजेशन देना है ना, तो स्टेटमेंट्स में इंक्लूड कर दो. So for x is equal to 4 to x is equal to 6, as electric field strength increases, acceleration also. ठीक है. गाइस, हुसैन ने मुझे सजेस्ट किया, ही गॉट डिस्कनेक्टेड. So just give me a minute. I need to switch on his recording option. So guys, मुझे 1 मिनट देना. ठीक है हुसैन, पहले तुम मुझे जरा एक्नॉलेज कर दो कि रिकॉर्डिंग ऑप्शन आपका स्विच ऑन हो गया है. ठीक है. एंड द लास्ट पार्ट दैट यू आर आस्किंग मी टू रिपीट ना, वो मैं वापस बोल देता हूँ.
So Sen D वाले part के अंदर the question was asking us find the value of D at which the electron has maximum acceleration. So based on the formula F is equal to ma, I replaced force by the term eq, so I got eq is equal to ma. And then I realized that for acceleration to be maximum, the corresponding electric field strength at that point must also be maximum. Okay, so then I went to the graph to look for a point at which electric field strength is going to give us maximum value. So I'll just quickly switch back to the graph. So diagram पर से देखो, at the starting point, I have marked with an arrow electric field strength is maximum at that point. So the corresponding distance at that point works out to be 0. Hence the answer for that part was D is equal to 0. पहले तुम okay कर दो कि you have gotten this part. फिर मैं next part में move कर जाऊं. ठीक है. Second part में right after this one. Next part read कर लो Hussain. It said, without any further calculation, describe the variation with distance of the acceleration of the electron. So Hussain, since we know that acceleration is proportional to the electric field strength, so basically the way the electric field strength is going to change due to proportionality, acceleration must also change in the same manner. So going back to the graph, G Hussain. So for the pink portion, for the pink highlighted portion, मैंने statement लिखा कि between 0 and 4, as electric field strength decreases, acceleration will also decrease. ये मेरा पहला statement था. And then for the green portion, मैंने लिखा था कि between 4 and 6, as the electric field strength will increase, the acceleration must also increase. तो ये wordings मैं आपको second part की show कर देता हूँ. रीड करके मुझे ओके कर देना हुसैन, ताकि फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाऊं. ठीक है, नो इश्यूज बेटा. ऑलराइट, अगला वाला क्वेश्चन देख लो. Two point charges A and B each have a charge of plus 6.4 times 10 to the power of minus 19 coulombs. They are separated in vacuum by a distance of 12 micrometers as shown. Points P and Q are situated on the line AB. Point P is 3 micrometers from charge A and point Q is 3 micrometers from charge B. So diagram पे देख लेना, there are two charges located at A and B, separated by a distance of 12. There are 2 points marked as P and Q. P is 3 micrometers from one charge. Q is 3 micrometers from the other charge. So the diagram is kind of symmetrical. First part, calculate the force of repulsion. So remember, force का आंसर डायरेक्ट आ जाएगा based on the formula. मैं numbers नहीं लगा रहा because I don't need the answer. So the charge is this much. And the distance is given to us. That's 12 micrometers. नंबर्स रिप्लेस कर दीजिएगा, अभी नहीं चाहिए मुझे. सो स्किप दिस वर्किंग. फोर्स का आंसर बाद में कैलकुलेट कर लीजिएगा. सेकेंड पार्ट में explain without any calculation why when a small test charge is moved between P and Q, the net work done will be zero. अच्छा, याद कीजिएगा नोट्स के अंदर हमने एक सिमिलर क्वेश्चन किया था कि कैसे पता चलेगा कि द नेट वर्क डन इज गोइंग टू बी जीरो. मैं आपको क्विकली रिकैप करा दूं. द क्वेश्चन सेज विदाउट एनी कैलकुलेशन. सो बस स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर लिखना है. दिस इज हाउ योर वर्डिंग शुड बी. Potential at P must be equal to potential at Q. Therefore, potential difference between P and Q
is 0 since work done is charge multiplied by potential difference. Therefore, work done also 0. ठीक है, so potential at P must be equal to potential at Q. Don't do any calculation, just a statement. Therefore, potential difference between P and Q should be 0. And since work done is a charge multiplied by potential difference, QV, so consequently the work done must also be 0. अच्छा, सी पार्ट में कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये जरा मेरे साथ साथ अली मुझे असिस्ट कर देना व्हेन आई स्टार्ट डूइंग द वर्किंग. ये थोड़ा सा सब लोग देख लो. So I'll keep the diagram intact. And the question is asking you, calculate the work done by an electron in moving from the midpoint of AB to the point P. यार इसकी वर्किंग मैं यहीं पे कर देता हूँ, बल्कि इनफैक्ट मैं काम करता हूँ, मैं इसको लैंडस्केप में ले जाता हूँ और वर्किंग को डायग्राम के साइड बाय साइड कर दूंगा, तो आपके लिए देखना आसान हो जाएगा. तो क्वेश्चन की वर्डिंग्स पढ़ लें. कैलकुलेट द वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रॉन in moving from the midpoint of AB to the point P. मैं इसको लैंडस्केप में शिफ्ट कर दूं और वर्किंग स्टार्ट करता हूं. So an electron is moving from the midpoint. So ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया टू द पॉइंट P. तो P इसका फाइनल पॉइंट हो गया. ठीक है, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेप वाइज देख लेना. पहला स्टेप, I'll calculate the potential at M. ये वर्किंग जरा केयरफुली देखते जाइएगा कि M का पोटेंशियल कैसे निकालना है. ठीक है, फॉर्मूला इरेज कर दूंगा, बट दिस वाज द फॉर्मूला Q अपॉन 4 पाई E नॉट R. अप्लाई करके देखते हैं. तो M का पोटेंशियल निकालना है, जरा चेक करते जाइएगा. ओके, चार्ज इज 6.4 टाइम्स 10 to the power of minus 19. 4 पाई E नॉट. डिस्टेंस डायग्राम पर से देख लीजिएगा, 6 माइक्रोमीटर्स. अच्छा, मैंने कन्वर्ट नहीं किया, कन्वर्ट करने का काम होपफुली अली कर लेगा. ओके, अली ने आंसर्स निकालने शुरू कर दिए हैं, तो अली जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं तब तक स्टेटमेंट्स लिख लूं, फिर तुम्हारे आंसर्स को फॉलो कर लेता हूं. सब लोग जरा केयरफुली सारे नंबर्स को देखना. पहले मैं M का पोटेंशियल निकाल रहा हूं. डिस्टेंसेस वगैरह के नंबर्स देख लो. अच्छा, कन्वर्जन मैंने नहीं किया, वो आई एम होपिंग कि अली खुद कर देगा. So this should give me the answer for potential at M. Let's see if Ali has worked out this answer. Then I'll proceed further. Okay, Ali, मुझे आंसर दोबारा लिख दोगे, क्योंकि तुमने मुझे कैलकुलेशन पूरी लिख दी है, so I don't quite know कि इसका आंसर कितना बन रहा है. So मुझे पहले इसका कैलकुलेशन का आंसर दे देना. Sure. अच्छा, तब तक मैं आगे की वर्किंग कर रहा हूँ. By the time he comes up with the answer. So the next working is, अब P का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं. नंबर्स प्लीज सब लोग देखते जाओ. The rest of you guys can continue with me. अली मुझे रिजल्ट दे देगा, so I'll write them down. डिस्टेंसेस वगैरह के नंबर्स को प्लीज जरा केयरफुली देख लो. कोई नंबर रिपीट करना हो ना तो डू लेट मी नो. दिस कैलकुलेशन जनरली इज ऑफ 4 मार्क्स, बिकॉज ज़ाहिर है थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता है इसमें.
अब मैंने माइक्रोमीटर्स को कन्वर्ट नहीं किया है। आप टेक योर टाइम अली, कोई इशू नहीं है। मैंने भी तुम्हारे आंसर्स लिखना स्टार्ट नहीं किए हैं। ठीक है, जब तक कि मुझे आंसर दे रहा है ना, तब तक लेट मी जस्ट लाइट अप अ सिगरेट। तब तक मेरा आंसर आ जाएगा। The working still needs to be continued. कोई नंबर मुझे अली बताना हो ना, तो प्लीज डू लेट मी नो। अनम्यूट करके ई नॉट की वैल्यू लिख देता हूँ। तो गाइज आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम, वो इत्मीनान से कर ले, मेरे पास आंसर्स आ जाए ना, देन आई विल प्रोसीड। व्हाई आर वी एडिंग? सो मोहित, अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना स्टार्ट नहीं किया, इसलिए अभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। अभी हमने सिर्फ एम का पोटेंशियल निकाला था। सो मोहित, एम का पोटेंशियल हमने निकाला था बिकॉज ऑफ टू चार्जेस, वन एट ए वन एट बी। तो पोटेंशियल्स कैलकुलेट करते हुए ऐड करते थे। सही है। सो पहले मैंने वी एम कैलकुलेट करने के लिए दोनों इंडिविजुअल चार्जेस के पोटेंशियल्स को एडअप किया। फिर वीपी निकालने के लिए भी अगेन एडअप करूंगा। फिर मोइस, जब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा तो तब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। ओके यार, मेरे पास फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, दैट्स द आंसर फॉर पोटेंशियल एट एम। ठीक है हुसैन, जरा सेकंड वाला भी करना यार। मैंने इसीलिए क्लास की बिगनिंग में पहले से ही पूछ लिया था कि यार आई नीड अ फ्यू कैलकुलेटर्स ना, बिकॉज आई न्यू कि वो इस टॉपिक में थोड़ी कैलकुलेशंस हैं। ऑलराइट, पी का आंसर आ गया 3.85, 3.9 कर देता हूँ, टाइम्स 10 to the power of -3। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो मोइज यहाँ पे अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अली ने कहा है नो सर 1 मिनट। अच्छा, एक काम करता हूँ अली, टेंशन ना लो गाइस। वो अब मैंने तो लिख दिया है ना, तो बजाय इसके कि मैं चेंज करूं, मैं कंटिन्यूएशन कर देता हूं और आखिर में लिख दूंगा प्लीज चेक द नंबर्स अगेन। अच्छा, हुसैन ने मुझे आंसर दे दिया। हुसैन, किस चीज का आंसर है 2.55? वीपी। ऑल राइट, आई चेंज इट। ठीक है, सो मेरा नेक्स्ट आंसर भी चेंज हो जाएगा। ये थर्ड स्टेप हो गया। अब फाइनल स्टेप, आपको वर्क डन कैलकुलेट करना था व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू मूव between these 2 points. So charge of the electron multiplied by the above answer. ठीक है, आई न्यू कि मुझे नीचे जगह नहीं मिलेगी पूरी वर्किंग की, इसलिए मैंने साइड बाय साइड कर दिया है पूरा रिजल्ट। ओके, अली ने लिखा हुआ है सॉरी सर कैलकुलेटर का मॉडल पुराना है। कोई मसला नहीं यार, होता है।
फाइनल आंसर हुसैन जरा दे देना बेटा, ताकि मैं आगे प्रोसीड करूं। मैं नॉनदलेस लिख लेता हूं, रीचेक योर कैलकुलेशंस जस्ट इन केस। ऑलराइट, फाइनल आंसर ये आ गया। In case if you have forgotten the significance of the minus sign, so let me repeat that again, कि माइनस साइन का मतलब है वर्क इज डन by the field in moving the electron between these 2 points. So in case if you have forgotten the significance of the minus sign, the minus sign implies work is done by the field in moving the electron between the two concerned points. ठीक है, तो ये आंसर मेरा फाइनली आ गया। मैंने नॉनदलेस मेंशन कर दिया है कि रीचेक योर कैलकुलेशंस, सो आई लीव दिस वर्किंग एज इट इज। हाइलाइटर मिटा दूं, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ऑलराइट, या बस लिख देता हूं द फाइनल आंसर इज दिस मच। ठीक है, द फाइनल आंसर मे बी इनकरेक्ट based on the calculation error if there is any. All right, so moving on. Guys, just give me a minute, जरा मैं AC चेक कर लूं, उसने लगा दिया है। All right, ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। um, two deuterium nuclei each have kinetic energy ek, are initially separated by a large distance. The nuclei may be considered to be spheres of diameter so and so, with their masses concentrated at their centers. The nuclei move from their initial position, so the initial position is given to us in the diagram, to their final position of just touching each other as shown. Okay, so initially they are moving from a far away distance towards each other, and finally they will come in contact with each other. So first part में for the two nuclei approaching each other, calculate the total change in gravitational potential energy. So remember gravitational potential energy का formula was this. पहले formulas recap कर लें हाँ. U is equal to phi into m. Phi can be replaced by the term minus gm upon r. So the final result will be this. अच्छा यार, एक बात recognize करना in a question like this. There is no point in writing one letter as capital M and the other one is small m, especially in a question like this. Although you may write it down because that is how we normally write it down, but यहाँ जरूरत नहीं है because both particles are deuterium. So you can technically use the same symbol to represent both particles. So ऐसे क्वेश्चंस में रेलेवेंस नहीं है कि आप एक को कैपिटल लिखो और एक को स्मॉल लिखो, दोनों के लिए सिमिलर अल्फाबेट यूज किए जा सकते हैं, which means कि if you want you can actually change down, in this case at least, you can change the formula and you can write down the formula even as follows. ठीक है, ऐसे भी काम चल जाएगा। अब मैं नंबर स्टॉप से कॉपी करते जा रहा हूँ, आप जरा देख लीजिएगा।
तो जी का रिजल्ट इट्स मोर कन्वीनियंट फॉर मी कि मैं वैल्यूज लिस्ट कर दूं ताकि अली वगैरह कैलकुलेशंस कर ले. कैपिटल एम इज 2u. चेक कीजिएगा बेटा, ड्यूट्रियम के लिए इट शुड बी 2u. द अदर एम ऑल्सो 2u. मैं u की वैल्यू भी मेंशन कर दूं. एंड आर बेटा देखिएगा डायग्राम के अंदर गिवन है. सही है. सो कैपिटल जी आ गया. मास की वैल्यूज मैंने लिख ली हैं. दे वर ड्यूट्रियम न्यूक्लियाई, सो 2u फॉर ईच. और मैंने u की वैल्यू भी स्टेट कर दी है, r को भी स्टेट कर दिया. आई थिंक मुझे फाइनल आंसर दे दिया है अली ने. so this is the end result. Minus 1.9 times 10 to the power of minus 49. ठीक है, ये फर्स्ट हो गया. अच्छा, for the second part they are now asking us to calculate the electric potential energy. कोई नंबर मुझे रिपीट करना हो ना तो प्लीज डू लेट मी नो. तो सेकंड पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है. इसका फॉर्मूला ये था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is equal to electric potential multiplied by charge. So this will be the result. And once again, at least in this question, it is not relevant to write down one charge as capital Q and the other charge as small q. जरूरत नहीं है. Although आपकी choice है, लेकिन जरूरत नहीं है. So which is why in this case as well, you can represent the formula as follows. So since both charges are identical, we can get away with using this result as well. Numbers लगाता जा रहा हूँ, आप जरा check कर लीजिएगा. So charge for a deuterium nuclei. टॉप से देखिएगा. A deuterium is H21. So charge is going to be पहले देख लिया मैंने क्या लिखा है. प्लस लिखा है फॉर द प्रोटॉन. अच्छा, 1 लिखा है बिकॉज देयर इज 1 प्रोटॉन. और ई लिखा है फॉर द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन. सो प्लीज केयरफुली. प्लस द साइन ऑफ प्रोटॉन, 1 number of proton in the nucleus, and E for the charge of proton. See? ये तो आपके पास पहला वाला चार्ज हो गया. अच्छा, दूसरा वाला भी सेम होगा. ई की वैल्यू भी लिख लूं. ई नॉट भी लिख लेता हूं. और आर की वैल्यू को भी स्टेट कर देता हूं. अब जरा सारे के सारे नंबर्स को इसमें भी लगा दीजिएगा. अच्छा, तब तक मोहित ने लिखा हुआ था, सर isn't this value too small to have any effect? Yes, you're right. The answer of the first part is very very small. ओके यार. सेकंड वाला का आंसर मुस्तफा ने बोला. कैन यू रिपीट द लास्ट पॉइंट? हाँ मुस्तफा. मैं चार्ज की वैल्यूज एक्सप्लेन कर रहा था. तो मुस्तफा, मैंने प्लस लिखा था बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन. द साइन ऑफ अ चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज पॉजिटिव. मैंने 1 लिखा था बिकॉज अ ड्यूट्रियम न्यूक्लियस कंटेन्स 1 प्रोटॉन. और मैंने ई लिखा था टू सिग्निफाई द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन. सो प्लस साइन ऑफ द प्रोटॉन चार्ज 1
number of proton inside the deuterium nucleus, and E, charge of a proton. सही. सो Q की वैल्यूज आ गई. ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं. जस्ट बी केयरफुल ना, बिकॉज इसमें गलती नहीं होनी चाहिए. सो प्लस साइन फॉर अ प्रोटॉन, 1 number of proton inside the nucleus of deuterium, and E, charge of a proton. So I've written down those values. E नॉट भी लिख दिया, R भी लिख दिया, और आई बिलीव अब नंबर्स आप लगाकर जरा चेक करके देख लीजिएगा. मेरे पास अली का आंसर आ रहा है. आई नीड दिस आंसर. सो मैं इसको हाईलाइट कर दूं. मुझे नेक्स्ट पार्ट में ये आंसर एक्चुअली चाहिए होगा. अच्छा, बाकी टर्म्स को मैं, ठीक है. अब लास्ट नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर द क्वेश्चन गोज ऑन टू से use your answers of the previous part to show that the initial kinetic energy of each nucleus is this much. Okay, so the question is asking us to show that the kinetic energy of each nucleus amounts to this value. अब इसके अंदर जरा आपको कन्वर्शन याद होना चाहिए. सो जिन लोगों को एएस से कन्वर्शन याद नहीं है ना, मैं आपको रिकैप करा दूं. सो स्टेटमेंट्स पहले देख लो, ताकि अगर आपको याद नहीं हो ना फ्रॉम एएस, ये एएस की रेडियो एक्टिविटी में पढ़ते थे, तो शायद आपको याद ना हो. EV is electron volt. This value is not given in the exams. ये लर्न करके जाइएगा. ये एएस में भी रिक्वायर्ड थी और A2 के अंदर भी रिक्वायर्ड है. So EV is electron volt, which is a unit of energy. So 1 EV is equal to so and so joules. So 1 MeV, M for mega, will be equal to this value. Both of these values are not provided to you in data booklet. So it is kind of expected कि आपको learn करनी है. Yes, the value is similar to elementary charge. सही है. So 1 EV आप learn kind of कर सकते हो जिस तरह रोहेल ने लिखा है कि the value is similar to the elementary charge. और मेगा EV तो फिर आप कन्वर्ट करके खुद भी निकाल लोगे. So the question is asking you that the initial kinetic energy of each nucleus should amount to so and so value. Now the diagram that was given to us, उसके अंदर the two deuteriums were actually moving towards each other. This was the initial frame. और फिर finally ये हुआ था कि they came in contact with each other. ठीक है. So in terms of energy considerations, we can say that as these deuterium will come towards each other, there is going to be a loss in their kinetic energy, and this will get transformed or converted into gain in electric potential energy. So loss in kinetic energy can be written down as follows. Remember to multiply it by 2. The reason for multiplying it by 2 is because both of the deuterium were moving. So loss in kinetic energy को मैंने EK लिखा है. That is what we have to find out. और times 2 कर दिया है because दोनों deuterium were moving towards each other. So 2 times EK, that will be the loss in kinetic energy. And gain in electric potential energy is basically answer from the previous part.
सही है, सो आई कैन यूज दैट आंसर। मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ। ठीक है, so let me repeat myself. When the two deuterium nuclei are going to move towards each other, the electrostatic repulsion between them will cause a loss in the kinetic energy. As a result, there is going to be a gain in electric potential energy. So the answer for loss in kinetic energy is 2 times Ek, and the gain in potential energy is the answer obtained from the previous part. Um, Rohil ने लिखा हुआ we are multiplying it by 2 because they are asking for kinetic energy of each nucleus. बिल्कुल सही है। तो यार आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच न्यूक्लियस निकालनी है ना, तो बेसिकली ई के निकालना है। सो बेस्ड ऑन माय वर्किंग, my result comes out to be this much. But this answer is in joules. So अब कन्वर्ट कर देते हैं। तो जरा आंसर देख लीजिएगा कितना आ जाता है यार, और फिर आप क्वेश्चन को दोबारा रीड करके पूरी वर्किंग को देख लेना। सो ऑलराइट, 0.19। ठीक है, मैं रुकता हूँ ताकि आप जरा पूरे स्टेटमेंट्स को दोबारा देख लो बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो गिव मी अ मिनट और सो, तब तक तुम लोग रीड थ्रू कर लो, कुछ पूछना है तो देख लो, एंड देन आई विल कंटिन्यू फर्दर। जस्ट गिव मी अ मिनट यार, मैं फिर आगे स्टार्ट करता हूँ। आजकल के एसीज इतने फजूल आ रहे होते हैं कि आई डोंट नो, बस खरीदते हैं, कुछ अरसे के बाद वैसे ही खराब हो जाते हैं। एंड आई स्टिल रिमेंबर इन माय डाइनिंग रूम there is a Mitsubishi AC which I purchased 12 years back, and that one still works like anything. And these newer ACs, ये चाइना से जो आ रहे हैं, I mean that was purchased 12 years back and that one is still running strong. And this one was I guess purchased less than 2 years back. आई थिंक एक ग्री का है और एक हायर का है, और दोनों कंपनियां बिल्कुल ही फारिग हैं। एवरी थर्ड मंथ के ऊपर इनका इनका गैस लीकेज हुआ हुआ होता है, इनका कंप्रेसर का कोई काम निकल रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है। और वो मित्सुबिशी वाले जो आई थिंक दे वर बाय द नेम ऑफ मित्सुबिशी स्लिम और समथिंग, बहुत पहले आते थे, अब तो आई थिंक आना भी बंद हो गए, बट दे यूज्ड टू कम फ्रॉम जापान। अब भी मतलब जबरदस्त काम कर रहे होते हैं, कोई लीकेज नहीं है, कोई कंप्रेसर का इशू नहीं है, कूलिंग भी अच्छी है। ये चाइना वाले पता नहीं क्या बना रहे होते हैं। और माशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत ने डॉलर ही इतना बढ़ा दिया है कि ये चाइना की भी चीजें जो है लोगों बेचारों को महंगी लग रही होती है अब। लिटरली दीज एसीज इन रीसेंट टाइम्स, ये मैंने लास्ट टाइम मालूम किया था तो आई थिंक कुछ 90,000 का था या 120,000 का था, समथिंग लाइक दैट। एंड दैट Mitsubishi was purchased when I think dollar was kind of 80 rupees or something. So वो 50,000 से भी कम पैसों में आए थे, and they are still working. और ये खान साहब ने जो है वो हमारी करेंसी की ऐसी की तैसी कर दी है कि बंदा कुछ नहीं कर सकता। जनरल के भी अच्छे होते थे हुसैन,
क्योंकि जनरल के अंदर भी दे यूज टू यूज कॉपर। अब वो ये करते हैं कि वो सिल्वर की वायरिंग यूज करके उसके ऊपर कॉपर की कोटिंग कर देते हैं। तो जब आप खोल के देखते हैं तो आपको कॉपर का कलर नजर आता है, और जब आप यूज करते हैं 2-3 सालों तक तो आपको नजर आता है कि अंदर सिल्वर की लाइनिंग हुई हुई थी। सो ये जनरल वाले बाहर से बिल्कुल सही आते हैं। वन ऑफ दीज शॉपकीपर्स ओनली टोल्ड मी कुछ अर्सा पहले कि सर ये हमारे पास यहाँ पर जब पाकिस्तान में आता है ना, तो वो जनरल के खोल कर इसको उसके अंदर से कॉपर वाली वायर्स को निकाल के मार्केट में बेच देते हैं, और उसकी जगह जो है वो सिल्वर वाली वायरिंग लगा के मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। सो ये है सिलसिला। तुमने क्या लिखा है? अभी तो करेंसी अच्छी हुई हुई है। अरे यार, 100 रुपीज से 160 170 पे चली गई, अब 170 से 160 पर आ भी गई, तो बर्बादी तो वैसे ही हो गई यार। एंड आई बेट यू जनवरी तक ये दोबारा 170 पे पहुंचा हुआ होगा द मोमेंट इनका आईएमएफ का गेम दोबारा शुरू होगा। और ये हुकूमत को जो है वो सिवाय ऑपोजिशन को गालियां देने के और कोई काम ही नहीं होता इनसे। जब टेलीविजन कभी ऑन कर ले बंदा, बस ये नून लीग के पीछे पड़े हैं, घबराना नहीं है आपको, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, खुदा की कसम इसने मुल्क की ऐसी तैसी कर दी है। मुझे तो रोज रात को खौफ आता है कि मैंने इस बंदे को अपनी जिंदगी का पहला वोट दिया था। सुबह 7 o'clock पे पहुंच गया था मैं वोट देने के लिए। हद हो गई। इससे तो बेहतर था मैं ये, आई थिंक जो डिफेंस से लड़का खड़ा हुआ था, जिब्रान समथिंग, द सोशल वर्कर गाय, आई थिंक उसी को मैंने वोट दे दिया होता। कम से कम वो बेचारा कुछ कर तो रहा होता है लोगों के लिए यार। तो इमरान खान ने तो ऐसी तैसी बर्बादी कर दी यार हमारी सबकी। 165.5 से 159.9 हो गया है। हाँ लेकिन मुस्तफा 100 से 159 पे भी तो गया है ना, उसका जवाब कौन देगा? उसी ने लोगों की बैकबोन तोड़ दी यार। ओके, आगे अगला वाला। हाँ, घबरा घबरा रहे हैं। हाँ यार, मुझे लगता है सभी घबरा रहे हैं। पता नहीं क्या करेगा यार ये इमरान खान। आई एम जस्ट होपिंग कि ये जल्दी चला जाए यार। ये तो पता नहीं क्या करने आया था। ही वाज राइट, ही सेड ना कि मैं सबको बराबर कर दूंगा। इसने अमीर और गरीब को बराबर ही कर दिया है। गरीबों को ये मार देगा और अमीरों को ये गरीब करके छोड़ेगा। एवरीथिंग हैज बिकम सो एक्सपेंसिव। आई मीन, वन ऑफ माय फ्रेंड, वो अपने घर की कंस्ट्रक्शन में कुछ काम करवा रहे थे। उनका जो इनिशियल एस्टिमेट था, ही स्टार्टेड हिज वर्किंग इन 2017। तो जो उनका इनिशियल एस्टिमेट था 2017 के अंदर, वो आई थिंक 10 मिलियन की कॉस्ट आ रही थी उनको, एक जो भी काम करवाना था। अब 10 मिलियन की कॉस्ट से वो चीज इंक्रीज करके 26 मिलियन पे चली गई है। 2.6 टाइम्स का इंक्रीज यार। कौन जवाब देगा? ना इससे आटा संभलता है, ना इससे चीनी संभलती है, ना इससे पेट्रोल की कुछ कुछ नहीं होता। अब आगे देखिएगा, जो गैस का मसला होगा दिसंबर के अंदर, लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही होगी बिकॉज उन्होंने एलपीजी वगैरह कुछ मंगाई नहीं है। कंप्लीट इनकॉम्पिटेंस है एट द utmost highest level, and nobody is willing to put their foot down कि यार कुछ काम भी करना है। बस बातें करवा लो इनसे। एनीवेज, गाड़ियां भी इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, you're राइट। बाहर चीज ही एक्सपेंसिव हो गई है यार। ओके, नेक्स्ट वाला देख लो। तो define electric potential at a point, uh, work done in moving a unit charge from infinity। यूनिट के साथ मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिख लूं, which is the appropriate terminology। from infinity to any point within the electric field। The second part के अंदर, a charged particle is accelerated from rest in a vacuum through a potential difference of v। Show that the final speed is given by this result। अच्छा, ये फॉर्मूला भी बहुत दफा आता है। So to prove that the velocity
of a charged particle as it accelerates is given by this expression. Again, velocity का question पूछा है ना? So start with the same basic idea. Change in kinetic energy is equal to change in electric potential energy. So in place of kinetic energy, we can replace it by the term half mv square. They want you to make velocity the subject. Electric potential energy can be replaced by the term v times q. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये रिजल्ट आ जाएगा. और इफ यू मेक v द सब्जेक्ट तो ये आंसर आ जाएगा. ये भी फॉर्मूला आपका बहुत दफा यूज में आ रहा होता है. सो ये वाले को भी जरा आई थिंक एज अ स्टीरियोटाइप आंसर याद कर लीजिएगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. सो हाफ mv square is equal to v times q, and then you simplify, then the answer for velocity turns out to be under root 2vq upon m. I'll need this answer in the next part. So जरा आंसर याद रख लें. मैं आगे रीड कर रहा हूँ. आप लोग जरा वर्डिंग्स पढ़ लो. मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ ताकि आप लोग प्रॉपर्ली वर्डिंग्स को देख लो. जो वैल्यूज गिवन है ना, मैं उनको हाईलाइट करते जा रहा हूँ. So the first value that is given to you is in units of coulombs per kilogram. That means the first value is for charge upon mass. तो एक information ये है. अच्छा, potential आपको given है. So voltage की value given है 470. और speed की value given है. So the question says a particle with a specific charge so and so is moving in a vacuum towards a metal sphere as illustrated. So the charged particle is actually moving towards a metal sphere. The initial speed of the charged particle is so and so when it is a long distance from the sphere. The sphere is positively charged and has a voltage of 470 volts. Using the expression of the previous part, so they basically want you to use this expression. So using the expression of the previous part, determine whether the particle will reach the surface of the sphere. तो आपको जज करना है, will this particle be able to reach the surface of the sphere or not? So using the above expression, comma, the velocity required to reach the surface of the sphere can be calculated as shown below. मैं नंबर्स लगा देता हूं, तो आप जरा देख लीजिएगा वेलोसिटी का आंसर कितना बनेगा. दिस वाज द फॉर्मूला जो आपके पास ऊपर था ना. मैं नंबर्स लगाता जा रहा हूं. नंबर्स आप चेक भी कर लीजिएगा. सो इट शुड बी 2 times voltage is given as 470 and the quantity charge upon mass is given in the question as 9.58 times 10 to the power of 7. The green highlighted numbers go together. So voltage is 470
I've written that down. And the value Q upon M, that is charge upon mass, that was given to us in the question as 9.58 times 10 to the power of 7. So the velocity that is required can be worked out as shown over here. So required velocity for the charge particle to touch the surface of the sphere, let's see कितनी आती है. तो यार जरा देखिएगा कितनी वेलोसिटी आती है अली नंबर्स को प्लग इन करके. I think okay सही है अली ने आंसर दे दिया. So this is the required velocity. Now if you compare this answer, मैंने इसको ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप दोनों ब्लू वाले आंसर्स को आपस में कंपेयर कर लो. If you compare this answer with this one, so the bottom answer, 3 into 10 to the power of 5, is telling you the velocity that is required for the charge particle to reach the metal sphere. So I think अब अगर आप इन दोनों को compare करते हो, तो then you can come up with the final concluding statement. Since the particle was projected with a lesser velocity, that is 2.5 times 10 to the power of 5 meters per second. Therefore, it will not reach the surface of the sphere. Okay, so we have used the formula which we calculated in the previous part, and the intention was to work out the velocity that is needed if you want the particle to be able to reach the surface of the metal sphere. So the required velocity came out to be 3.0 times 10 to the power of 5. We then compared this answer with the actual velocity with which the particle was projected. And the statement says, since the particle was projected with a lesser velocity, that is only 2.5 times 10 to the power of 5, therefore in this scenario, it will not be able to reach the surface of the sphere. ठीक है. तो गाइज यहाँ पर आज कंक्लूड कर रहा हूँ, और अली अपलोड कर देना बेटा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, और उस्मान आप ही कर देना. इफ अगर लिंक भेज दोगे ना तो जरा बाकी लोगों के लिए कन्वीनियंट हो जाएगा. ठीक है गाइज, थैंक यू, टेक केयर एंड खुदा हाफिज बेटा.